Good evening, and I welcome you, students. A very important topic. Garbage. What is garbage? You are very well aware that there is a movement in the entire country that we should have a clean environment. We should remove the garbage. But what is garbage, student? How it is collected, and what are the problems if too much garbage will be there? This is the important topic that will be discussed today, student. We are talking from the scientific point of view. You are myself, you all probably the whole day we are involved in activities, eating. You are eating so many things, and you are also getting a lot of packed materials in your homes. What you are doing? And then you have two dustbins nowadays. What is that? Dry and wet. You are putting dry items, wet items, and probably by the end of the day, try to weigh how much all these unwanted materials are there. Do you have any idea how many kilograms it may be every day from each house? You have any idea? Tell me. If you weigh it, approximately it may be coming 2 kilo, 3 kilo, and sometimes more than that. So students, the garbage, he says we produce. Who is producing the garbage? The land is there, earth is there, atmosphere is there, water is there, everything, naturally everything is available. But the activities of the man, our activities, our requirements, we have increased to the extent where a lot of undesirable, unwanted material also is coming in our homes. And then finally, we want that unwanted, undesirable material to go out of our homes. And what we are doing? We are saying, oh my God, by the end of the night, you have got few kilograms of the garbage. It's interesting that earlier we were not so conscious, but now we have become very conscious, students. A lot of movements are taking place that what is this garbage? And it is a very important issue nowadays. First question, as I say, what is garbage in science, student? What we already know, we are producing a lot of garbage. Garbage, trash, rubbish, or refuse is a waste material. Waste material. Important point. Garbage means all waste material is garbage, student. When I say garbage, it is a waste material. Can you eat that garbage which you are putting in the dustbins? Can we eat it? No. Then what we are doing? Can we keep it at our home? If every day you keep collecting these things, in 1 month, how much it will be there? In 1 year, how much it will be there? Your whole house will be full of this waste material, student. Interesting. And where you are disposing it off, all these problems are there. So waste material that is discarded by humans, usually due to perceived lack of utility. There is no utility. You are saying there is no utility. Or even if there is a utility, it is a lack of utility. Lack of utility. When something is not useful to you, what you will do? You will throw it. And what people are earlier doing, throwing it to the next door. And what will happen? Next door throws to the next door, then heaps of, finally their heaps are collected. So the term generally does not encompass bodily waste products. We're not talking of the bodily waste product. Bodily waste products have to be there. We excrete, student, we eat to live and excrete, and that is something separate. We know that what type of systems we have to excrete, urines or our stools or all that. So does not encompass bodily waste products, purely liquid or gaseous waste, not toxic waste products. Neither we're talking of liquid or gaseous waste, nor toxic waste products, but garbage. Garbage, student. Household waste or rubbish produced on a day-to-day life is called garbage. So if we have to ask student what is garbage, question number 1, as we said, what is garbage, student? That is answered. Household waste, household word, rubbish produced in day-to-day life. Every day we are producing this. Garbage includes spoiled food. You bring some fruits, you peel the fruits. छिलके कहाँ फेंक रहे हैं? डस्टबिन में. Vegetables you are peeling, leaves, wood, grass, paper, you are writing paper waste, leather, cotton, cattle dung, metals, fiber, paper, rubber, so many things. All this is the examples of the
household waste. Okay, note down, students. Our purpose is to understand. And nowadays the type of questions are coming, you see, they are based on application and how anything is affecting our life. Okay, very good. So far, so good. Now the question is garbage a pollution? Question number 2. Question number 2, student, is garbage a pollution? Or what is a garbage pollution? Garbage including everyday item. You have, a lot of people are smoking, and you have seen cigarette butts. Whatever is left of cigarette butts, student, everywhere. Plastic bags, oh my God, this is in large numbers, plastic bags everywhere. Everything is coming in plastic, student. Go to the market, buy fruit, then again plastic. You have 10 items, again plastic. Because it costs the least. So everything is packed in. And even those ready walas and all that selling fruits, vegetables, this is the cheapest plastic bag they are keeping. So we have no choice, and you are accepting it. I am accepting it. All this. Where are they going? Bottles, student. What type of bottles? You are buying mineral water, student. You have seen that. You are buying the aerated drinks, student. Aerated drinks and other juices and so many other liquids, student. They are coming in bottles. What bottles they are? Mostly they are plastic bottles. They are not glass bottles, student. Glass is more costly. Plastic bottle. And what will happen to those bottles after use, student? Cans. Now there is a fashion of cans also. Aerated drinks are being stored in cans and costing more. You say the food doesn't get oxidized here. They are using metal is more costly than the glass, student. And discarded fishing gear are common causes of marine. All this is where it is going, student. You have seen water. They have shown so many times picture, rivers, lakes, student, even seashores you have seen nowadays. If you ever visit the coastal areas, what you are finding, all these things, bottles, plastic bag, cans, and they are being discarded. Now, there is a marine life, student. There's a life. What is a marine life? There are aquatic species. And there are aquatic plants. You know about that. Aquatic plants, student, they are inside. And they are very important for our life. This species is also important, and these aquatic plants are also providing a lot of oxygen to us. Marine animals, there are seabirds, can mistake plastic material for food. Now, these marine animals, they are not human animals, student, marine animals. They were food, they want food, student, and even plastic, they will consider it's a food. So they will mistake plastic for food, and they will consume it. And what will be the result of that? If plastic will go inside their body, student, often end up dying a slow and painful death from starvation or stress. So they will die, student, a painful death. Interesting, very important point, student. That these waste materials or garbage is a serious pollutant, student. Pollution, garbage pollution. So once you become aware of that, student, then we have to take steps to get rid of it or reduce it. You cannot get 100% because it's going to kill. He's a killer. Garbage waste ends up in garbage pollution, and that garbage pollution is a killer. So you see, garbage waste, which our activities are producing, we are using this, and then disposing it of garbage waste will lead to garbage pollution. And ultimately, you find it is a killer. It is a killer, student. Let me see what happened.
Ultimately, we are saying, student, it is a killer. Garbage, it is a killer. It is a garbage pollution is a killer. Therefore, we must take proper steps to minimize or reduce it. How do we minimize or reduce it? Now that is the question. Let us see what more we know about it. Question number 3. What type of waste is garbage? Question number 3 on the screen. Try to make our lectures in the form of question and answer so that the question is before all of us, and then answer. What type of waste is garbage? Refuse or municipal solid waste is non-hazardous solid waste from a community that requires collection and transport to a processing or disposal site. Refuse includes garbage and rubbish. Garbage is mostly decomposable food waste and rubbish is mostly dry material. So you have a decomposable food waste and dry material such as glass, paper, cloth or wood. And you see the picture. How horrible is this picture? See, you have seen in your country also there are places where you will see this type of situation. See how much horrible is the state, student. If you keep on dumping every day you add a student, decomposable food waste and rubbish, dry material. If you add every day, what will happen in a month? Thousands of tons you will collect. Now where it will go? Will you burn it? No. Will you recycle it or no? Then you will throw it to some other place where how we will take it. See, the situation is very, very serious. Garbage waste, now it is clear, student. Garbage waste will end up in garbage pollution, and that is a serious problem now. Environmental problem. Okay, let us see more. Activity, he talks activity in the NCERT because many times questions are asked on the activity and helps us in understanding the situations and how to take control of this. Collect waste material from your homes. In your homes, what waste material you have? Student, what are the waste materials every day? Check it. Generated during a day, like kitchen waste. From the kitchen, what is coming? Spoiled food, vegetable peels, tea leaves, milk packets, empty cartons. Everything you bring, open the carton in the kitchen. Peeling of the fruits, vegetables, food gets spoiled also is in the kitchen. You are making tea. Every day tea leaves. Where the tea leaves are going? Empty cartons, waste paper is there. Medicine, you are buying medicine, empty medicine bottles. Every day I get something. Or bottles, student, whatever plastic material you are using, strips, bubble packs, old and torn cloths, broken footwear, all this every day you are having all this. Number 1, bury this material in a pit in the school garden, or if there is no space available, you can collect the material in old bucket, flower pot, and cover it with at least 50 centimeters. Cover with at least 15 centimeters of the soil. You put 15 centimeters of the soil. 1 centimeter, you know how much. Keep this material moist and observe 15-day intervals. What are the materials that remain unchanged over long periods? What are the materials which change their form and structure? Of these materials that are changed, which one changed the fastest? Okay, now this is a work, is an activity, is an experiment you can try. Do you have any idea which materials are not going to be affected? Plastic, nothing is going to happen. Plastic, glass, and all that. We will explain to you what type of materials are biodegradable and non-biodegradable materials, students. So we are aware of all these situations, what is happening. Certain materials will
be changed over 15 days, but certain materials will not undergo any change. There are microorganisms which can change certain materials, which may be whatever materials which you have used. For example, the spoiled food, vegetable peels may be changed, but other, you will never get a plastic and other plastic bottles, nothing will happen to them. They will not be changing. Some will change faster, some slower. Again, depends on the action of microorganisms on these food, on those packets or materials which you have. You know what we are trying to say? There are microorganisms. What do they do? They can act. So there will be a chemical reaction, student. And then what will happen? They will change certain materials, not all the materials, not on all. They cannot act on plastic or other thing, but they can act on the spoiled food or vegetable. You know about all those things. What else is there, student? We have seen in the chapter on life processes that the food we eat is digested by various enzymes in our body. The food goes inside your body, student, and enzymes are there. Unless enzymes are there, food cannot be digested, student. Without enzymes, food will not be digested and then we will die. We know about it. Enzyme does not break down everything we eat. But can these enzymes, they are very specific. You should know that. Enzymes are highly specific. Highly specific, student. So many enzymes are there. Different type of enzymes are there. They cannot break down. In the mouth also, in the saliva, you have an enzyme which breaks down the complex starch into simpler sugar molecules. All this is happening. In the gut system also you have enzymes, you know about them. So they are needed specific enzymes. The enzymes are highly specific, as I say. These enzymes, highly specific enzymes, to break down the complex food substances into simpler substances. That is why we will not get any energy if we try to eat coal. Agar aap kya coal le le, grass le le, student, can we digest? Human beings? No, we cannot digest. There are no enzymes for that. Enzymes are not available for this process. This process is not going to take place. Similarly, plastic hai. Plastic का कुछ भी नहीं होना. They will not be digested. Because many human-made materials like plastics, human-made materials now, see, human-made materials. What are the human-made materials? Plastic bags जितने भी हैं, कौन बना रहा? ये सब बना रहे हैं हम, human beings. We are synthesizing because they're costing less, and you pack the things in them. They cannot be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. Bacteria cannot break it. Cannot break plastic, student, into simpler substances, saprophytes. These materials will be acted upon by physical processes only by heat and pressure, but under ambient condition found in an environment, they persist for a long period of time. But they will be, if once they are on Earth, on the atmosphere, they will live for a long period of time. They will live for a long period of time, student, hundreds and thousands of years. Only when high heat is there or high pressure is there or some changes will take place. See the situation? Biodegradable waste. So there are two types of waste, student. Question. What are, important question now, what are biodegradable waste, student? Those substances that degrade or break down naturally.
certain substances, they break down naturally. Non-biodegradable waste are those that do not degrade easily. They will not degrade. The non-biodegradable substances do not degrade easily or by the action of natural. What are the natural agents? As we said, microorganisms are there. Inside the soil, there are bacteria and there are other microorganisms. They can act on the food. Student, you heard about decomposers also in the previous lecture. So there are two things: biodegradable and non-biodegradable waste. Important question can be asked on this. Biodegradable can be broken, they can be broken by natural agents, which are microorganisms. And second, non-biodegradable, they cannot be broken by the microorganism or by natural agents, students. So biodegradable materials are substances that decompose easily through the action of bacteria, fungi and other living organisms. ब्रेड रखते हो, फंगस लग जाती है. फंगस तुमने देखी है, व्हाइट कलर की भी होती है, डिफरेंट कलर्स की भी होती है, और पीला पीला कलर आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है बहुत सारे सब्सटेंसेस में. फ्रूट्स वगैरह कुछ देर पड़े रहेंगे, ये सब क्या है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है. एंड यू शुड नॉट टेक फूड, दिस स्पॉइल्ड फूड जिसे हम कहते हैं, दैट मीन्स अ बैक्टीरिया इज वर्किंग ऑन दैट. ज्यादा दिन कोई भी चीज रखते हो, फल फ्रूट सब्जियां या कोई खाने पीने की चीज, तो क्या होता है, उनमें दिखती है फंगी. तो ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस यूजुअली इंक्लूड सब्सटेंसेस फाउंड डे टू डे यूज. फूड रिफ्यूज, ट्री लीव्स, ग्रास क्लिपिंग, प्लांट मटेरियल्स आर यूजुअली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट, examples of biodegradable. पेपर एंड फूड वेस्ट बायोडिग्रेडेबल. अब पता है आजकल पेपर के बैग्स आ रहे हैं, वो कहते हैं पेपर के बैग यूज करो क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उनको यूज कर लेंगे. मैंने और आपको पता, ये खाद जो बनती है स्टूडेंट, सीवेज स्लज, हॉस्पिटल वेस्ट, स्लॉटर हाउस वेस्ट, डेड एनिमल एंड प्लांट्स. कोई एनिमल प्लांट डेड हो जाते हैं तो क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं. फूड वेस्ट, these are some of the examples of ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. नोट कर लो स्टूडेंट, लिस्ट नोट कर लो, क्वेश्चन आते हैं, सब टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं. रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रही है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर द चैनल, शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल अदर्स. Our videos are going to help you for 10th, 11th, 12th and even for parents, because we are giving you a lot of examples which are our applications of what we are learning in our everyday life. Science 10th is connected with everyday life. The parents can also listen to it because there is plenty of information to live better on this earth. Our activities, our things are hurting the earth, creating environmental problem, pollution problem, and how to handle all those is important point. So तो आपके पेरेंट्स को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को और ये सारे लेक्चर सुने, इसमें बहुत फायदा है, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है हमें. we use many sources to collect the data. It takes 3-4 hours minimum to prepare one lecture which I am giving to you on online बहुत हार्ड वर्क है. तो इसलिए कह रहे हैं कम से कम इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, so that our hard work is not wasted and information reaches more and more people. They become more aware. The applications of science are important. Non-biodegradable materials, student, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला पेपर में, important है, हर साल पूछते हैं. Biodegradable, non-biodegradable, non-biodegradable substances cannot be broken down by natural organisms, therefore act as a source of pollution. ये सबसे बड़ी pollution है. These type of waste cannot be easily handled. It cannot be broken down by natural occurring agent. तो जो natural agents हैं आपके,
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया जो है स्टूडेंट, और ये फंगी अभी आपने देखा, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोजर्स आपने पढ़ा था बड़ा डिकम्पोजर। तो ये नेचुरल एजेंट्स हैं, ये इस पे एक्ट नहीं कर सकते। सो दे कंटिन्यू एग्जिस्टिंग ऑन सरफेस ऑफ अर्थ फॉर लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स। अरे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ईयर तक ये पृथ्वी पे रहने वाले हैं। Most of the inorganic substances are non-biodegradable. Recyclable waste is a waste material that cannot be recycled. अब क्या करोगे? रिसाइकलिंग के लिए भी इतना इजी काम नहीं। आप कह रहे हैं जी रिसाइकलिंग करो, रिसाइकल, लेकिन रिसाइकलिंग विल नीड मनी, एनर्जी। अरे हर चीज को रिसाइकल भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग नीड्स एनर्जी स्टूडेंट। इफ आई विल रिसाइकल अगेन आई विल नीड एनर्जी, आई विल नीड मशीन, आई विल नीड एनर्जी टू रिसाइकल। तो ये सारी चीजें हैं, फिर बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो अनदर डेली केस इज विजिबल इन द केस ऑफ हाउस होल्ड डिटर्जेंट। देखो आप दो होते हैं, एक होता है सोप्स, आपने पढ़ा था सोप्स और डिटर्जेंट्स में, हमने जो वीडियो अपलोड की हमने पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स होते हैं फैटी एसिड्स के, और इनमें अमोनियम और वो देखा था आपने सल्फोनेट्स होते हैं, केमिकल फार्मूले हमने आपको दिखाए थे वीडियो में। तो इसमें ये तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है डिटर्जेंट्स। तो ये पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, दे विल क्रिएट लॉट ऑफ, और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो पानी में जाने के बाद क्या होगा, ये डिग्रेड हो जाएंगे, ये नहीं होगा। डिटर्जेंट इज पास्ड बाय कॉम्प्लेक्स फॉस्फेट, सोडियम ट्राई polyphosphate which removes dust from surface cloth. These complex phosphate are termed as surfactants and are not biodegradable. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है स्टूडेंट डिटर्जेंट, ये जो डिटर्जेंट है। तो ये भी एक सीरियस वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। जैसे ही पानी में कोई चीज जाएगी तो एक्वेटिक लाइफ इज इन डेंजर, एक्वेटिक प्लांट्स भी है, ये सब डेंजर में है, बिकॉज ये सब्सटेंसेस पानी में जा रहे हैं। तो एग्जांपल्स आ गए आपके सामने, नोट कर दो। एग्जांपल पूछे जाते हैं बहुत दफा क्वेश्चन आंसर में। एग्जांपल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ग्लास क्या बायोडिग्रेडेबल है? नहीं। ग्लास, प्लास्टिक, मेटल आप थ्रो करते हो, हैजर्डस सब्सटेंसेस हैं। आपको पता है बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हम करते हैं स्टूडेंट, जो एटम बम के पार्टिकल्स हैं इन हिरोशिमा एंड नागासाकी जो यूज हुआ था, अभी तक बहुत सारे पार्टिकल हवा में फ्लोट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो वेयर एवर देयर आर सच इंडस्ट्रीज दे कैन गिव सम हैजर्डस सब्सटेंसेस। केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं, तुमने देखा है वो बहुत स्मेल सी आती है। और बहुत सारे माइंस के अराउंड, कोल माइंस के अराउंड भी बहुत सारा वो निकलता है स्मोक। तो ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ब्लैक स्मोक, हैजर्डस सब्सटेंसेस एमिशन होती रहती है, एंड लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल लिविंग टू दोज एरियाज। ऐसे बहुत सारे हैं, आप न्यूज में देखा होगा। ये पेस्टिसाइड्स कहाँ पे जा रहे हैं? आप जितने भी एग्रीकल्चरल में पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं भाई, वो बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव द, जो फसल है उसको बचाना है, सर्वाइवल ऑफ द प्लांट, क्योंकि वो इंसेक्ट्स खा रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये प्लांट्स में चले जाते हैं और प्लांट से पानी में चले जाते हैं, और फिर हमारे बॉडी में धीरे धीरे अकमुलेट होते हैं। दे विल कीप ऑन अकमुलेटिंग इन आवर बॉडी। ये फाइबर्स हैं, ग्लास इतना यूज कर रहे हो, ये ई वेस्ट भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक का इतना यूज हो रहा है तुम्हारा। अरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप खरीदे जा रहे हो, लो सारे मोबाइल्स हैं आपके पास, ये सारा जो भी टीवी वीवी और जो सब लैपटॉप, एक दिन ये सब खराब होके कहाँ फेंकोगे? ये सारा कुछ जब डेड हो जाएगा तो इसको कहाँ डिस्पोज करोगे बताओ? ये सारा ई वेस्ट है। ई वेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा इस टाइम बहुत है हमारे देश में। ई वेस्ट इकट्ठा ही हो जा रहा है, क्योंकि हर एक के पास लैपटॉप, हर एक के पास दो तीन मोबाइल, और जब ये खराब होगा लो। आर्टिफिशियल रबर है, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हैं, ये सब एग्जांपल है नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई वेस्ट आज के बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है हमें भी? अब ये कह रहा कि क्वेश्चन आ गया, ट्रीटमेंट कैसे करोगे वेस्ट के? हाउ विल यू ट्रीट द वेस्ट? ट्रीटमेंट्स क्या है?
what are the treatments of the waste? It is not an easy process as well. Treatment of waste is important to reduce adverse impact of waste material on both animals and plant life. देखो ये important word use हुआ, adverse impact of waste materials. किसके ऊपर? On animals and plant life. In addition to norms set by government, individuals should also make effort to treat the waste. The 3R, 3R का यूज हो रहा है स्टूडेंट. ये कह रहे हैं रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस, ताकि बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट ना हो. रिसाइकिल में भी एनर्जी यूज होगी, रीयूज में भी एनर्जी यूज होनी है. सिर्फ रिड्यूस का ही बचा जो मेन है. दैट how many of us are ready to reduce the items we buy, student? Every day now, after the COVID-19 corona pandemic, सब ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है. क्या कर रहे हैं हम? ऑनलाइन. ये ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है स्टूडेंट. और एक चीज देखो कि ऑनलाइन में वट एवर गुड यू आर ऑर्डरिंग, इट इज पैक्ड सो हाईली. कितनी पैकिंग होती है उसकी, पैकेज मटेरियल कितना आता है स्टूडेंट. ये सब वेस्ट पैकेज मटेरियल आता है. और उसको क्या करते हैं हम? आपने डस्टबिन में डाल देते हैं ये सारा. तो देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ रही है. पहले जाते थे शॉप से उठा लाते थे, अब क्या कर रहे हो कि वो जैसे ही पैक होके आएगा तो उसके लिए कितनी बड़ी पैकिंग होती है. तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग, सब चीजें ओवर पैक हो रही है. Accumulation of waste इतनी ज्यादा हो रही है. This will also result in utilization of energy and other resources, as an attempt should be made to dispose of both the type of materials in different categories. तो फिर ये 3 R's तो बताए उन्होंने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिड्यूस करिए जो आप चीजें खरीदते हैं, यही बचाएगा हमें. बाकी सब में पैसा खर्च होगा, एनर्जी यूज होगी, और एवरीथिंग कैन नॉट बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड. क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट. Why are some substances biodegradable and some non? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर. आपके पास 2 मिनट का वक्त है. बोलो क्या आंसर दे रहे हो. क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर में से. अब आपको देखना है क्या क्वेश्चन आ रहे हैं. कि कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नहीं होते. अभी तो हमने बताया, पूरा पैराग्राफ बताया. तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की क्या डेफिनेशन बताइए मैंने स्टूडेंट, वही लिखनी है. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैन बी ब्रोकन, ठीक है, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कौन कौन से मैंने बताए, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, और एग्जांपल्स भी आपको दिए जो भी है वेस्ट मटेरियल्स जो आपके घरों में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस टाइप के जो वेस्ट मटेरियल है. नंबर 1 मैंने 1 लिखा, और नंबर 2 में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं. They cannot be broken, ठीक है, into simpler substances by microorganisms. तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या लिखा था हमने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट एक्ट. इसके ऊपर क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट on these biodegradable substances, do not act on non-biodegradable substances. The coming paper is descriptive. Descriptive means you have to write. लेकिन कितना लिखना है,
वन लाइन, वन वर्ड आंसर। वो भी क्वेश्चन का आंसर आप देखें एक एक नंबर के बन जाते हैं, बाद में एक एक नंबर आधा नंबर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्क्रीन पर। स्टूडेंट गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं? देखो आप, जैसे आपके पास ब्रेड है, ये आपने रख दी, 5 डेज के बाद क्या हुआ? अब इसमें फंगस लग गई है, दिखता होगा एक ग्रीन सा कलर आ जाता है ऊपर, ग्रीन कलर दिखेगा या ब्लू, इस तरह कोई कलर आ जाता है, ये लगता है ये फंगस आ गई, खराब हो गई ब्रेड। और इसका क्या होगा? फाउल स्मेल भी आएगी कुछ। तो कोई चीज, कोई गैस ऐसी होती है जो ये फिर एमिशन होगी। इसी तरह आपके पास स्टेल फूड है, आपने देखा कभी उसका टेस्ट और स्मेल क्या होती है? वो फाउल, खराब हो जाती है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं स्टूडेंट कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फाउल स्मेल क्रिएट करते हैं। तो ये जो क्या होंगी, सर्टेन gases will be evolved student which will be harmful। और उसके बाद में जो एंड रिजल्ट है, एंड प्रोडक्ट, वो भी वेस्ट हो गया, वो भी वेस्ट हो गया। ये सारी चीजें आप फेस करते हैं, आपने देखा ही होगा। और कुछ अगर है आपके पास तो बता दो, एनीथिंग एल्स यू नो। देखो वी हैव टू थिंक बिफोर वी आंसर द क्वेश्चन एंड देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो वाटर हील मी, आई विल सिप सम हॉट वाटर, सिप सम हॉट वाटर। देखो इतनी सर्दी है और उधर ओमिक्रॉन और कोरोना का थ्रेट है, सारे स्टूडेंट मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बट अब स्कूल खुल रहे हैं, सो आई थिंक देयर विल बी ऑफलाइन एग्जाम एज पर द शेड्यूल डेट। इसलिए वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ वेल, प्रैक्टिस वेल। पेपर, फाइनल जो पेपर है वो डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट, काफी हाई लेवल का होता है सीबीएसई पेपर। तो वी हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू थिंक एवरी क्वेश्चन, वी हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली, देन आंसर द क्वेश्चन। देखो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंसर लिख दें। तो बट आई ट्राई दैट यू शुड अंडरस्टैंड and apply your mind, think, focus, concentrate, apply your mind। और फिर कम लिखिए, write less, write correct, बहुत ज्यादा नहीं लिखना। give any two ways in which non biodegradable substances would affect them। अब non biodegradable कैसे affect करेंगे भैया? non biodegradable क्या होगा? आपने ये कहा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट एक्ट ऑन दैट, so what will happen student? What will happen? The non-biodegradable will live, non-biodegradable substances will live on earth for a very long time। तो ये hundreds of years, thousands of years तक रह सकते हैं। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट? ठीक है, सो दे विल एड टू द गार्बेज एंड विच कैन एंड अप इन वाटर बॉडीज एंड विल आल्सो एड टू एयर पोल्यूशन, एयर वाटर पोल्यूशन, ये सब होने वाला। कहां पे रखोगे उन्हें? रखने की जगह है ही नहीं हमारे पास। तो अल्टीमेटली दे विल कॉज एयर, वाटर and land pollution and will is a serious threat to aquatic life, aquatic animals, plants and environment। तो ये environment को सारा का सारा डेंजर है स्टूडेंट, सारे पॉइंट्स नोट कर लो।
देखो कैसे आंसर हम करते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस को, समझना है। रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं, इनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ऑब्जर्व करिए। अब एक्टिविटी आ गई। एक्टिविटी किस लिए आती है? क्योंकि क्वेश्चन आजकल जो पेपर में आते हैं, दे गिव ऑन एक्टिविटीज आर टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू वेस्ट जनरेटेड एट होम, इज देयर ए सिस्टम इन प्लेस टू कलेक्ट वेस्ट। नंबर 1, आपको पता है आजकल गाड़ियां आती हैं आपके अराउंड, देयर आर एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज मेड अरेंजमेंट, यू कैन गिव फ्री गार्बेज, फ्री vans are there where you can dispose the material. Find out how the local body MCD regional welfare deal with the waste. Are the mechanism in place to treat biodegradable and non? तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब आपको पता लग गया, एक बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन आर दे एबल टू डू हैंडल बोथ, ये आपने बताना है। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट होम इन डे, कितना 2-3 किलो तो मैं कह रहा हूँ वेस्ट होता ही होगा डेली। अब एक बार मेजर करके देख लेना, फिर वेट करके देख लेना, मे बी एवरी डे। हाउ मच वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, इसमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सा, यू ऑलरेडी नो विच कैन बी बायोडिग्रेडेड। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन द क्लासरूम इन अ डे, आपके क्लास में क्या करते हैं बच्चे? वो सारा दिन फेंकते रहते हैं चीजें, खाते भी हैं, लंच बॉक्स खोलते हैं तो भी वेस्ट है, और वट एवर मटेरियल्स यू आर यूजिंग, कुछ चीजें थ्रो करते हो, पेपर वगैरह सब कुछ, ये सारी चीजें डिस्पोज ऑफ करते हो, कितना हो जाएगा? हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन अ डे, कितना होता है? स्कूलों में झाड़ू लगते देखा तो उसके बाद कितने वो सारे कैंप्स भर जाते हैं। सी हाउ मच वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, सुजेस्ट वेज ऑफ डीलिंग दिस वेस्ट, तो बताइए कैसे डील करेंगे वेस्ट। और 3 R हमने बताए थे, क्या बताया था? रिसाइकिल किया, रीयूज किया और रिड्यूस किया। और कुछ है तो आप और बताइए क्या करेंगे। फिर एक्टिविटी आ गई, find out how the sewage in your locally is treated, are there mechanism to place ensure the local water bodies are not polluted by untreated। देखो बहुत दफा आपने देखा होगा, आपका वाटर आ रहा है ना, उसमें क्या होता है, और वाटर में मिट्टी आ जाती है, you have seen dirty water sometimes coming at your home, dirty water, मड होती है उसमें, कई बार ये मड टाइप, तो वो क्या होता है कि जो सीवेज होता है, सीवेज की कोई पाइप जो है लीक कर जाती है, पाइप लीकेज, तो वो क्या हो सकता है कि सीवेज की पाइप जब लीक कर जाएगी स्टूडेंट, तो वो क्या करेगा कि लोकल वाटर बॉडीज का पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन। तो यू नो इट्स विल कॉज सीरियस डिसीजेस, बहुत सारी डिसीजेस कॉलेरा वगैरह ये सब होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, फाइंड आउट द लोकल इंडस्ट्रीज इन योर लोकेलिटी ट्रीटिंग। अब इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम है, कैसे ये ट्रीट करेंगी जो वेस्ट है? केमिकल इंडस्ट्रीज का और भी डेंजरस है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, केमिकल भी हैं, सब तरह की इंडस्ट्रीज हैं, तो ये वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करती हैं? आर दीज मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर सॉइल एंड वाटर आर नॉट पोल्यूटेड, क्योंकि मेनली क्या होना है, सॉइल और वाटर पोल्यूशन, ये जमीन में जाएगा सारा वेस्ट या वाटर में, तो क्या ये करती हैं या नहीं करती? दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी। Improvements in our lifestyle have resulted in greater amounts of waste material generation. तो हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किए, ज्यादा गैजेट्स यूज किए और ज्यादा चीजें खरीदी, तो व्हाट इज हैपनिंग? ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है। चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव अ रोल टू प्ले, विद मोर एंड मोर थिंग्स वी आर बिकमिंग we use becoming disposable. Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-diable. What do you think about the impact of these on the environment? देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन में आप जो भी प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं तो पैकेज मटेरियल बहुत ज्यादा है, वेस्ट पैकेज मटेरियल, और ये प्लास्टिक वाले जो मटेरियल्स हैं, जितने भी प्लास्टिक्स में रैपिंग होती हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, तो दे आर एडिंग टू लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, तो दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम स्टूडेंट। तो कैसे इसको हैंडल करेंगे? अब ये क्वेश्चन एक बार इसी पे आ गया था, डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन। देखो ये क्या कह रहा है कि आपने ट्रेन में गए, इफ यू आस्क योर पेरेंट दे विल प्रोबब्ली रिमेंबर टाइम व्हेन टी इन ट्रेन वाज सर्व्ड इन प्लास्टिक ग्लासेस, ये प्लास्टिक के ग्लासेस व्हिच हैड टू बी रिटर्न टू द वेंडर। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल कप वाज हेल्ड एज अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर रीजन हाइजीन।
प्लास्टिक ग्लासों में दी, उन्होंने कहा वापस कर दो। No one at that time perhaps thought about the impact caused by disposal of millions of these cups on a daily basis. तो ऐसे millions of cups जो dispose of करोगे, millions of plastic cups, तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट फिर? They will add to the garbage, non disposable, और ये non biodegradable है। Sometime back coolers, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, coolers इंट्रोड्यूस किए। डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ क्ले, ये क्ले से बनते हैं स्टूडेंट। वर suggested as alternative, but little thought showed that making these coolers on large scale would result loss of fertile top soil. कुल्लड़ कैसे बनते हैं? कुल्लड़ बनाने के लिए you have to use fertile top soil स्टूडेंट। तो इसका लॉस होगा, किसका? fertile top soil का। if I will make this now disposable paper cups are being used, इन सबको फिर क्या उन्होंने किया? अल्टरनेटिव डिस्पोजेबल पेपर कप्स आ गए, पेपर वाले कप्स यूज हुए। व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेज ऑफ पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक? क्या एडवांटेज है? अरे ये बायोडिग्रेडेबल है, ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल। क्वेश्चन आया था पेपर में स्टूडेंट्स, तो ये बायोडिग्रेडेबल है और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसमें ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और इसमें आप देख रहे हो फर्टाइल टॉप सॉइल का लॉस है। तो ये दोनों ही ठीक नहीं है, फिर इनको भी छोड़ो, इनको भी छोड़ो। तो पेपर कप्स का क्या फायदा है कि दे आर बायोडिग्रेडेबल। तो ये पेपर कप्स का यूज हुआ स्टूडेंट, जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो दिस एंड्स अप द चैप्टर ऑफ एनवायरनमेंट स्टूडेंट, एंड वी हैव डिस्कस्ड प्लेंटी ऑफ इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चंस। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। वी विल बिगिन अनदर न्यू टॉपिक। Heredity is left, we will do that, and any other topic with question answers we will continue. Good night, bye bye. I will see you in the next class.